Dear participants, welcome to our workshop. Today's workshop is about ISO 9001, the quality management. And your trainer is Mr. Afaq. He will conduct this session. Sir, you can continue furthermore. Assalamu alaikum. A very warm welcome all of you for this webinar for ISO 9001. And thank you so much, Farah. And thank you all of you for joining in this webinar. My name is Afaq Ahmed, and let me just show you my brief introduction. Then I will ask you guys to show your brief introduction, and then we will start the proceedings. So this is workshop for ISO 9001 quality management system. My name is Afaq Ahmed, and I'm a lead auditor and trainer for ISO 9000 course. And in this course, we will talk about what is ISO, what is quality, and why you guys will join this session. यानी इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि हम क्यों जरूरी है इस कोर्स को अटेंड करना और why हम इस कोर्स को जो है अटेंड करने के हवाले से बात कर रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी मैं ऐड कर दूं. Can you guys see my presentation? आप लोग मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्लीज अगर स्टॉप शेयरिंग कर दें तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ऑन कर दूं. Sir, आप शेयर करना शुरू कर दें because I make you the host, तो अब आप शेयरिंग कर सकते हैं. Okay, thank you so much. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अगर माइक म्यूट कर लीजिएगा. All right, thank you. We can see your slides right now. All right, thank you. So guys, thank you once again for joining me in this webinar. Bit late but on time. मेरा नाम आफाक है और by qualification I'm MBA and मेरा काम यही है. I mean मैं ऑडिटिंग कर रहा होता हूँ और ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ ISO 9000 की, हेल्थ एंड सेफ्टी की. मैं अप्रूव लीड ऑडिटर हूँ डिफरेंट स्टैंडर्ड का, जिसमें ISO के स्टैंडर्ड हैं, जिसमें अदर स्टैंडर्ड्स हैं. तकरीबन 250 से ज़्यादा इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ, ट्रेनिंग करा चुका हूँ और इसमें IRC अप्रूव कोर्सेज हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे और तकरीबन 12 साल का तजुर्बा है, जिसमें आई वाज वर्किंग इन यूनिलीवर, आई वाज वर्किंग इन टेलेनॉर पाकिस्तान, आई वाज वर्किंग इन सर्टिफिकेशन बॉडी और राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद आल्सो ऑडिटिंग एंड सर्टिफिकेशन बॉडी. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अपना वन बाय वन नेम और बताइएगा कि आप कहाँ जॉब करते हैं या स्टूडेंट. तो अगर वन बाय वन अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा. यस, वन बाय वन अगर आप अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें. Assalamu alaikum, sir. Yes guys, वालेकुम अस्सलाम. Sir, my name is Ali और मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ. मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर चल रहा है. लेकिन जैसे ये ISO के कोर्सेज की मैंने काफ़ी डिटेल्स वगैरह देखी थी, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था इनके बारे में थोड़ा जानने का. तो मैंने सोचा कि एक वेबिनार अटेंड करूँ ताकि इन कोर्सेज के बारे में थोड़ी फर्दर नॉलेज मिल सके. एक्सीलेंट इंशाल्लाह जो है आपको बिल्कुल नॉलेज मिलेगी और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अली. यस, थैंक यू सर. हु इज नेक्स्ट? सर
आई एम रबिया और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आप पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है और भी अदर्स होते हैं। तो इसमें और इसका क्या मोटिव है, यानी इसमें अश्योरेंस भी लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक क्वालिटी सर्विसेज, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो ये सब कवर करेगा? सब सब बताऊंगा मैं आपको, बेफिक्र रहें। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं रबिया, कि जॉब करती हैं या पढ़ती हैं, क्या मसरूफियत है? सर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हूँ, इसके अलावा मैं अभी फ्रीलांसिंग वर्क सीख रही हूँ। एश्योरेंस करती थी मैं, एश्योरेंस मैंने अभी लीव किया, लेकिन मैं एफिलिएट मार्केटिंग में एश्योरेंस जो है वो इंक्लूड करना चाहती हूँ, वो सीख रही हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू रबिया, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी आमना, अगर आप इंट्रोडक्शन करा दें। या हादिया। यस गाइस। मोइस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोइज़ एंड मैं जो हूँ सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव हूँ सेंटेक स्मार्ट पावर पे। बेसिकली ये आईओटी और रिमोट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं टेलीको कंपनीज को और सोलर कंपनीज वगैरह को। ओके, तो मोइस इससे पहले कोई ट्रेनिंग अटेंड किया आईएसओ की? डू यू गाइस नो व्हाट इज आईएसओ? नहीं, मैंने इससे पहले कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। ऑलराइट, चल अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, उम्मीद है। थैंक यू मोइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यस साकिब। अच्छा जी। सुभान अली, तैयबा, आयशा का भी कनेक्ट नहीं हुई अभी सिस्टम। यस, एनीवन वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ? अपना इंट्रोडक्शन जरूर करवाएं ताकि ट्रेनर को पता चले कि आप कितने एंथुसियास्टिक हैं टुवर्ड्स अटेंडिंग दिस कोर्स। अगर सिर्फ इसको रेडियो की शो की तरह चलाना है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन, बिकॉज ये हमारा जो कोर्स है ये है ही पूरा बेस कर रहा होता है इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज सैबा रमज़ान और मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ फूड इंजीनियरिंग की फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, और मेरा ये Good. थर्ड ईयर चल रहा है। और ये मेरा थर्ड Excellent, ईयर excellent. चल रहा है और आईएसओ ऑब्वियसली हमारी फील्ड से रिलेटेड है, फूड इंजीनियरिंग से, सो इसीलिए मैं अटेंड कर रही हूँ। एक्सीलेंट। आईएसओ तमाम फूड से रिलेटेड है, तमाम जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसके वाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी की। अच्छा, जब क्वालिटी का वर्ड आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? Whenever you guys you heard the word quality, what the first word comes into your mind? What's perception of quality development into your mind? Function and properties. Yes, function and properties. Okay, anyone else? देखिए, क्वालिटी इज बेसिकली, अगर आप बात करें इसको डिफरेंट ओपिनियन से लोग देखते हैं। क्वालिटी की कुछ कहना चाह रहे कोई? तो क्वालिटी के हवाले से हम हमेशा से ये बात देखते हैं कि क्वालिटी इज बेसिकली अ टैग जो कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लोगों को दे रहे होते हैं। कभी हम सेटिस्फेक्शन की लेवल पे, कभी हम उसकी प्रोसेस की बेहतरी के लेवल पे, कभी हम अश्योरेंस की बेसिस पे। तो क्वालिटी इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट बाय इट्स फिटनेस। कोई प्रोडक्ट या सर्विस कितनी फिट है और उसने आपकी रिक्वायरमेंट को कितना पूरा किया है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी। फिर हम बात करते हैं आईएसओ। आईएसओ इज बेसिकली अ एनजीओ जो कि 1947 में आया, ठीक है। और आईएसओ का काम स्टैंडर्ड मेकिंग, ठीक है। यानी पूरी दुनिया में इस चीज को समझा जाता था कि स्टैंडर्ड के हवाले से यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। आईएसओ ने स्टैंडर्ड के हवाले से अपनी यूनिफॉर्मिटी दी कि चाहे आपकी कंपनी इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो या पाकिस्तान में, इफ यू गाइस आईएसओ सर्टिफाइड तो सेम प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। और इसी को सामने रखते हुए आईएसओ ने पहला स्टैंडर्ड बनाया 1988 में, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ के तकरीबन 22,654 से ज्यादा स्टैंडर्ड है और हर इंडस्ट्री का उनका स्टैंडर्ड है, ठीक है।
जिसमें ISO 9000 क्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ISO 14000 रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एनवायरनमेंट को, ISO 27000 रिफ्लेक्ट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से उसकी हिसाब से ले रही है। ISO 9001 है, 9001 इज अ जेनरिक स्टैंडर्ड। आई मीन हम रियल एस्टेट एजेंसीज की बात करें या देव हैकल हॉस्पिटल्स की बात करें, ह्यूज टेक्सटाइल कंपनीज की बात करें, सब आईएसओ के जो स्टैंडर्ड है उस पर सर्टिफाइड होते हैं। क्यों करते हैं आईएसओ का स्टैंडर्ड, क्या फायदे क्या है? फायदा यह है कि बेसिकली बता रहा होता है आपको कि इसका नीड, पर्पस, स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट। नीड क्या है? नीड बेसिकली आईएसओ की है कि आप कंपनीज इसे इस वजह से लेती हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो। कंपनीज चाहती हैं कि हम ऐसे स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करें कि हमारे कस्टमर्स बेहतर क्वालिटी हासिल कर सकें। कंपनीज चाहती हैं कि वो ऐसे स्टैंडर्ड को अप्लाई करें कि लोग मोटिवेट हो, ठीक है, लोगों को प्रोसेस के हवाले से पता हो, हर चीज का डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हो, ठीक है। यही वजह है कि वो कंपनीज जो कि बस चल रही होती हैं, जहाँ पे किसी चीज की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, किसी चीज की पूछगछ नहीं होती, वहां पर वेस्ट भी बढ़ता है। जब मैं वेस्ट की बात करता हूँ तो वेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि कचरा, वेस्ट का मतलब एफर्ट का वेस्ट, वेस्ट का मतलब है पैसों का वेस्ट, एनर्जी का वेस्ट, हर किस्म का वेस्ट हो, ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करें, और ये ऐसी जितनी कंपनीज ने आईएसओ लिया हुआ है 50% कंपनीज जो हैं वो आईएसओ 9001 पे सर्टिफाइड, ठीक है। अब देखें आईएसओ 9001 का हम और जाकर कंपनीज में ऑडिट करते हैं, ऑडिट होता है 1 दिन का, 2 दिन का, लेकिन बाकी दिन क्या होता है? बाकी दिन ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि वो आईएसओ के अहकामात के मुताबिक काम करें, और वो काम इस तरह करेंगी कि आपके पास ऐसे लोगों की जरूरत है होती है जो कि आपको ये बताते हैं कि आपकी कंपनी में आईएसओ के हवाले से डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाने, इंटरनल ऑडिट किस तरह करने, मीटिंग्स किस तरह करनी है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग किस तरह, ये कुछ बेनिफिट्स। 7 प्रिंसिपल है आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसमें कस्टमर फोकस है, लीडरशिप है, एंगेजमेंट ऑफ पीपल है, प्रोसेस अप्रोच है, इम्प्रूवमेंट है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। आईएसओ के हवाले से एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, और फिर हम आपके सवालात और जवाबात का सिलसिला भी जारी रखेंगे, और आपसे इस हवाले से सवालात भी लेंगे, और आपको बताएंगे कि इस कोर्स को करने के बाद बेसिकली आपका प्राइम बेनिफिट क्या होगा, मतलब क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी, या फिर आपको एज एन इंडिविजुअल क्या फायदे हो सकते हैं आईएसओ के स्टैंडर्ड में। बिकॉज आई डिड दिस कोर्स इन 2015, और उसके बाद मेरे पास तो काफी अपॉर्चुनिटीज आई इस हवाले से, और वो अपॉर्चुनिटीज कैसे आई उसके लिए मैं छोटी सी वीडियो आपको शेयर करना चाहूंगा, उसको दिखाना चाहूंगा आपको, और ताकि आप उसको देख सकें। 9001 Awareness Training, brought to you by Anscorp. ISO 9001-2015 provides a set of standardized requirements for a quality management system which is flexible enough to be used for all sizes and kinds of businesses. Using ISO 9001-2015 helps ensure that customers get consistent, good quality products and services, which in turn brings many business benefits. The ISO 9001-2015 standard is based on Annex SL. This new high-level structure brings a common framework to all management systems and standards. This helps to keep consistency and alignment with different management system standards, often matching subclauses against the top-level structure while applying common language across all the standards in place. The high-level structure of the ISO 9001-2015 standard are Scope, Clause 1, Normative References, Clause 2, Terms and Definitions, Clause 3, Context of the Organization, Clause 4. Leadership, Clause 5, Planning, Clause 6, Support, Clause 7, Operation, Clause 8, Performance Evaluation, Clause 9, and Improvement, Clause 10.
Clause 4 to Clause 10 are the only clauses which have specific requirements that the organization needs for an implementation. The best way to view the ISO 9001 Quality Management System requirements is through a Plan, Do, Check, Act approach. As the picture shown below, the separate processes are being linked in one large cycle for its improvement. It starts with understanding the context of the organization and the needs of interested parties in the QMS, which is used to define the scope of the QMS and its processes. Followed by the commitment of leadership in the company to drive the organization to a customer focus by defining the organizational roles and responsibilities and by establishing a quality policy to give the overall QMS a focus. The next level of planning is to identify and address risks and opportunities of the QMS, including setting and planning for quality objectives and changes to support continual improvement. Now is the time when the QMS moves along with your business activities. The organization needs to provide the support structure to allow you to run the business effectively as planned. This includes resources, identifying competence, awareness, communication, and to set the processes for creation and control of documented information. Once the company has processes, controls, and supports in place, it is time to identify controls for the operation, product or service requirements, designs developed, controls placed on externally provided processes, products, and services. The process of producing the product or service needs to be carried out with control of product and service release. Any non-conforming products or services need to be addressed. In short, the activities of creating and providing products or services to meet the needs of your customers needs to be accomplished. There is a need to monitor, measure, analyze, and evaluate the products or services to ensure they meet requirements, the processes used are adequate and effective, and customer satisfaction is being met. Further is the management review process, which reviews and assesses all of the monitored data to make changes and plans to address the issues. This involves the actions needed to address any issues found in the check step. Improvement is the overall heading for these action steps, with the activities of addressing nonconformity and corrective actions to eliminate the causes of actual or potential nonconformities as the first step in acting to improve the system. The goal of a QMS is to work toward improvement for the company, because only through improvement will a company be able to compete in industries that are growing ever more competitive. There are other numerous benefits of the ISO 9001 standard. It allows you to become a more consistent competitor in your marketplace. Better quality management will also help you meet the needs of your customers. More efficient ways of working will save time, effort, money, and resources. Improved operational performance will also cut errors and increase profits. You will motivate and engage your staff with more efficient internal processes. You will likely win more high-level customers with your improved customer service. Lastly, you can broaden business opportunities by demonstrating compliance to an ISO 9001-2015 quality management system. For more information on how to obtain an ISO 9001-2015 standard, please feel free to contact us at info@antscorp.com.
www.icso900.com. Thank you guys for with us during this webinar. और जो मेथोडोलॉजी है वो आपने देखी कि क्या मेथोडोलॉजी है इसके गिर्द, क्यों ISO 9001 अच्छा है, क्या वजूहात हैं। तो ये जो कोर्स है हम ओमनी में कंडक्ट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली 8 वीक्स का कोर्स है जिसमें हम ओमनी के सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं। और इस 8 वीक्स में हम एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग होती है, आपको वर्चुअल क्लासेस के जरिए और फिजिकल क्लासेस के जरिए बताया जा रहा होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई जा रही होती है। ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह के लोगों की जरूरत होती है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जानते हों, उसे पहचानते हों, कोशिश करते हों कि उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर रिक्वेस्ट करूंगा फरा से कि वो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स बता। एनी क्वेश्चन गाइस? कोई सवाल? मेरा एक सवाल है। अच्छा, ये जो ISO स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, इनका कोई ताल्लुक होता है लीन मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा वगैरह से? अच्छा सवाल किया है। देखिए मोइस, पूरी दुनिया में हर ममालिक ने काम करने के हवाले से उसूल बनाए हुए हैं। every country has made some standards. पाकिस्तान ने हलाल का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, यानी जब आप हलाल कोई भी फूड प्रोडक्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेंगे आपको हलाल सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। ठीक है। लीन सिक्स सिग्मा ये भी क्वालिटी पे बात कर रही होती है। ठीक है, सिक्स सिग्मा बात कर रहा होता है एरर प्रूफिंग पे, लीन बात कर रहा होता है वेस्ट मिनिमाइज वेस्ट पे और मैक्सिमाइज द ऑप्टिमिस्टिक रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन पे बात कर रहा होता है। तो बात जो हो रही होती है वो यही है। लेकिन अगर कोई कंपनी सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड है या 9000 सर्टिफाइड है, मकसद एक ही होता है कि कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट मिले। आपस में इनका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। एनीवन एल्स? और कोई सवाल? एक क्वेश्चन था 27001 के हवाले से, what about ISO 27000? साकिब ने पूछा था। देखिए, so 27000 डिनोमिनेट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO ने हर स्टैंडर्ड की एक सीरीज नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ताकि लोगों को याद रहे। 9000 की सीरीज कहीं पे भी देखें आप समझ जाएं क्वालिटी है। तो वो तमाम कंपनीज जो कस्टमर का डेटा रखती हैं अपने पास, उसको सिक्योर रखना जिम्मेदारी होता है उनका, ताकि डेटा लीक ना हो, कॉन्फिडेंशियल। तो वो ISO 27001 करती है। ज़्यादातर IT कंपनीज कर रही होती है, फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कर रहे हो। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। सवाल पूछने पे कोई कैद नहीं। जी जनाब, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई इशू? जी, ये मैं पूछना चाह रहा था, ये बेसिकली जो ये वर्ड यूज करते हैं ISO 9001 इसके साथ और मतलब ये इसका स्टैंडर्ड मतलब ये किस ISO नेशनल स्टैंडर्ड्स और ये किसी चीज का डिफरेंट भी है थोड़ा सा। मैं बता देता हूँ, थैंक यू। ISO जो है वो किसी चीज का मुखफ़फ़ नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये है ISO का मुखफ़फ़, सिंपल एज दैट। ISO का जो हम शॉर्ट फॉर्म के लिए ISO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है जी, 8 वीक्स का कोर्स है। थैंक यू। और हर वीक हम क्लास ले रहे होते हैं, वीकेंड पे फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ आप क्लास अटेंड करवा सकते हैं। वर्चुअल और नॉन वर्चुअल, फिजिकल दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप बात कर सकते हैं फरा से। फरा अगर आप मौजूद हैं तो आप रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपके सामने शो भी हो रही हैं गाइस, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फरा आप अगर बताना चाहें। Yeah, sure. All right. Thank you so much, sir. Okay. Thank you everyone for attending our workshop.
If you have any queries relevant to this program, please contact us on these provided numbers, or you can visit our website. And for workshop certification, you can message us on our WhatsApp numbers. Okay, so thanks a lot, Mr. Afaq, for conducting this session, and thank you participants for attending this session. थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज। Hafiz.